Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 8th, I'm again here, Headmaster UPS Afan. Hope you all are fine along with your family members. Today I've got an English question paper which was prescribed for the class 8th in the year 2018. And there is an application at question number 5. It's a writing skill section, third, question number 5, part 1. The question is, write an application to the headmaster of your institution requesting him, her, to provide adequate supports material for the benefit of the students. Very simple question है, कहता है कि आपको अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है और क्योंकि आपको स्कूल में एडुकेट सपोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आपको उसमें रिक्वेस्ट करना है कि स्कूल के लिए हमें सपोर्ट्स मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है. तो एप्लीकेशन का जो प्रोफार्मा है मैंने इससे पहले आपको बताया है कैसे है. हेडिंग होती है, फिर बॉडी होती है, सब्जेक्ट होता है, इसी तरीके से नीचे हम सप्लीकेशन लिखते हैं. तो वो तो आपको पता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही लिखनी है. थोड़ा बहुत आपको वर्ड्स के साथ खेलना है कि बॉडी में क्या लिखना है. तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है मैंने आपकी सहूलियत के लिए इस वाइट बोर्ड पे लिखी है. तो मैं पढ़ूंगा, आप पहले गौर से सुनेंगे इसको, फिर आप पेन और कॉपी निकालेंगे, आप इसमें ये नोट करेंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में आई है एक दिन किसी भी टाइम आ सकती है आपको. तो यू शुड टेक नोट ऑफ दिस इन योर नोटबुक. सो मैंने कहा, हमने लिखा यहाँ पे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ऑफन. टू लिखा मैंने, टू नहीं लिखेंगे ठीक है, लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ऑफन. फिर लिखा हमने सब्जेक्ट रिक्विजिशन फॉर सपोर्ट्स मटेरियल. रिक्विजिशन मीन्स डिमांड से हम कहते हैं, इसका मतलब है रिक्विजिशन, और QUISITION, रिक्विजिशन फॉर सपोर्ट्स मटेरियल. फिर सर है, कामा, वी the students of this institution would like to state to your good self that we don't have adequate supports material available in the institution, so we are not able to play any game in our free time. उसके बाद पैरा है, we therefore request your good self to arrange the following games material for us so that we could enjoy free time well. The items needed are, फिर है colon, 2 dot. First, cricket bats, 3 numbers, 3 बैट आपको चाहिए. cricket balls, 3 numbers. फिर है बैडमिंटन रैकेट, 6 numbers. बैडमिंटन रैकेट किसे बोलते हैं, जिसको आप लोग जॉल बैट बोलते हैं, इसको बैडमिंटन रैकेट बोलते हैं. फिर उसके लिए शटल कॉक्स होते हैं, शटल कॉक पैक, 5 numbers. पैक में होते हैं वो शटल कॉक्स, एक पैक में बहुत सारे होते हैं. और सीरियल नंबर 5 है फुटबॉल, 1 नंबर आप चाहते हैं. 6 सीरियल है वॉलीबॉल, 1 नंबर, यानी 1 वॉलीबॉल चाहिए आपको, 1 फुटबॉल चाहिए. उसके बाद वी होप फॉर योर अर्नेस्ट एक्शन, यानी हमें उम्मीद है कि आप जल्दी ये हमारे लिए ये सामान मुहैया अरेंज करेंगे. उसके बाद नीचे यूअर्स फेथफुली अब्दुल रशीद, मैंने लिखा है अब्दुल रशीद, यहाँ पे हम कामा डालेंगे. स्टूडेंट सेक्रेटरी
UPS often. تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹ لکھا ہے. تو اس میں یہ سمپل ورڈس ہیں, اس میں کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے. صرف شاید ریکویشن آپ کے لیے ڈیفیکلٹ تھا, وہ تو میں نے آپ کو بتایا. ریکویشن مینز ڈیمانڈ, یعنی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں سپورٹس مٹیریل کی, اور کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, یعنی کیا چاہیے آپ کو, یہاں پہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہے. کیونکہ ہم نے لکھا یہاں پہ we therefore request your good self to arrange the following games. But following games جو نیچے دیے گئے ہیں گیمز مٹیریل وہ ہمیں چاہیے. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ لکھا الگ الگ کہ آپ کو کیا کیا چاہیے تاکہ آپ انجوائے کریں یہ گیمز پیریڈ, رائٹ. تو آئی ہوپ کہ آپ اس طریقے سے لکھیں گے, صاف ستھرا لکھیں گے, کیونکہ ایگزام میں جو بھی ایویلویٹر ہوتا ہے جو آپ کے مارکس دے گا آپ کے آنسر اسکرپٹس کا, تو وہ صرف دیکھتا ہے کہ اس بچے کو پیٹرن پتا ہے کہ نہیں. پیٹرن آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اوپر ہیڈنگ ہے, پھر یہ ہے سبجیکٹ ہے, سر لکھنا ہے, تو نیچے سپلیکیشن ہے یورز فیتھفلی لکھنا ہے, کیسے لکھنا ہے. جیسے اس دن میں نے بولا آپ کو یہاں پہ سیدھے لائن سے آنا چاہیے نیچے, تو یہ چیزیں وہاں پہ دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک, اس کے ہیڈنگ کے نیچے جو سپلیکیشن ہے اس کے ہاف مارکس ہے, ہاف ہی ہے جو باڈی آف لکھتے ہیں. تو یو مسٹ نو فرسٹ دا پیٹرن, پہلے اپلیکیشن کا پیٹرن آپ کو پتا ہونا چاہیے, یہ دھیان میں رکھنا ہے, تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے. تو سمپل ورڈز ہیں, تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. تو کاپی پہ آپ اچھی طریقے سے صاف فیئر کریں گے بنا کسی مسٹیک کے. تو نیکسٹ ٹائم ویل میٹ اگین, ٹل دین خدا حافظ.